Hello, now we again start. There is a problem again in the network. So this is a problem. So I just say that. Now, what I say that I just try to explain you the proof. This x inverse y x to the power n is equal to, we can write x to the power inverse y x, and now x inverse y x to the power n minus 1, and in the similar fashion we can write x inverse y x, now x inverse y x and x inverse y x to the power n minus 2, like this. So now if we have to apply the generalized associated law onto these two terms, we getting x inverse y x x inverse or x, and now next term is equal to x inverse y x to the power n minus 2 is there. Now this term is clearly is identity is there, so you can just write this is equal to x inverse sorry, y is here also. Okay. So this one is equal to identity is there, so we have a y e y and x is there. And now next term is as it is x inverse y x to the power n minus 2. Now y into e is equal to y is there, so this can be written as a x inverse y square x, and now you have a x inverse y to the power n minus 2 is there. So n minus 2 is there, this power is 2 is there. Next term is what is next? If you apply the similar fashion, we have to x to the power 3, sorry, x inverse y to the power 3 x, and next term is x inverse y x to the power n minus 3. In the similar fashion, uh, in the in the similar fashion, we can getting this similarly up to go to the end, we have to uh, reaching the this is equal to x inverse y to the power n minus 1 x, and now the last term is left is only for x inverse y x is there. So n minus term is there and it's a one term is there, so this is equal to all this thing. Now this can be written as a x inverse y to the power n x is there. So if you have x inverse y to the y x to the power n is nothing but is equal to x inverse y to the power n x is there. Or this is can be, you can write either this form x y x inverse to the power n. This is also the same as x y to the power n x inverse. You can just change the left and right thing, and then you can go get the proof of this also is a similar fashion. We have to just say that. So now I just say that we can just say this is true for all the elements for the either this is true for each and every integers is there. So these are the some six basic properties of the group when G and H is a group, or Ij are the element of a set of integers is there. This satisfies all these six properties, and this six properties is called is a exponent laws of this thing is there. So now I'm not going to the all of them proof one by one. So I just explain you how do you have to write a proof is there. This is the important and useful for our later discussion is there. Now we move to the next is order of element. Now अभी तक क्या किया था? Now beginning before this we have to just say that अगर हमारे पास G is non-empty कोई set था, the number of element of a G is called the order of a this G is there. Now we what we just say that अभी इससे पहले just हमने क्या किया है कि any element G belongs to G, the powers of a G. So an important approach studying the group, understanding their structure to look at the set of all powers
of a fixed element is there. An important question is for a given G belongs to G, N belongs to some natural number, some positive integers are there, uh, some Sabir, some positive integers are there with G to the power N is equal to identity. What happens if G to the power N is equal to identity? If N is some natural number or positive integer, we ignore the negative power since this exponent before the law of exponential, we just said that g to the power minus n is the same as the g to the power n to the power inverse. क्यों? क्योंकि because if g जो है g is the element of a g है, g कोई group होता है, if g is तो ये हमेशा implies करेगा आपके पास कि g inverse जो होगा वो भी किसका element होगा, is also the element of a g is there. So g belongs to g, then g inverse is also the element of a g. So that means negative powers की जब बात करेंगे कि g to the power माइनस एन की जब बात करेंगे, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वी कैन से दैट जी ऑफ इनवर्स टू द पावर एन एंड दिस इज द सेम थिंग इज इक्वल टू सो दिस इज ट्रू for all negative, so we ignore a negative power because this g to the power minus n can be written as the g to the power n to the power inverse is, or g to the power n की inverse का power is there. So now the definition of this order of an element is this. If G is a group, so first we have a G is a group is there, and G small g is the element of a capital G with G to the power n is equal to identity is there for some n belongs to the n natural number, or we can say that some positive integer is there. Then the order of a G is written as O of G is there, and all this thing is equal to this mod of a G is there, is the smallest m belongs to n such that G to the power m is equal to identity. यानी कि वो smallest number जहाँ पर G की power m हमें identity मिल जाए यानी m, और if G to the power n is not equal to identity for all n belongs to n, then we say that G has a infinite order is there. फाइनाइट ऑर्डर की बात ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर कब होगा, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज फाइनाइट, इज कॉल्ड इज अ फाइनाइट ग्रुप, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट G इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज देयर. नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि वो G कोई किसी ग्रुप का एलिमेंट होगा और इसकी जो पावर्स होंगी. अब पावर्स की बात जब करेंगे, देखिए दो चीजें यहाँ पर है हमारे पास. अगर हमारा ग्रुप जो है G अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हम G की पावर m का मतलब क्या होगा हमारे पास कि G डॉट G up to G, that is m times. Okay, now suppose we have a G is under addition is a group is there, then G to the power m का मतलब हमारे पास क्या होगा कि G plus G plus G and so on plus G, that is again m times. Okay, so this means if we have a binary operation is multiplication, then G to the power m का मतलब क्या होगा कि G by m times is there. If group जो है is under addition is there, then the sum of these element D to the power m का मतलब क्या होगा कि we have to G add m times is there, m G plus G plus G plus G is equal to this. So अगर जहां पर whatever smallest m is giving you a G to the power m is equal to identity, जहां पर ये identity element दे देगा, इस m क्या होगा smallest, यानी कि this is the first m we were getting, G to the power m is equal to identity, then we can say that this is the order of this element, this particular element, order of this particular element is equal to m is there. That means m G to the power m minus 1 is not equal to identity, but maybe G to the power m plus 1 is equal to identity. This possibility is G to the power m plus 1 identity, but we have to just say that smallest positive integer कौन सा होगा वहां पर G to the power m. So यहाँ G to the power m minus 1 not identity है, G to the power m is identity, G to the power m plus 2 3 4 all are identities there. The smallest कौन सा हुआ G to the power
M is there. So this M is identity is there. So we can say that. So we simply is smallest positive integer, a natural number, whatever you say that. If g to the power m is equal to is giving you a identity element is there. So we say that this is a order of the element of this, and division generally I just denote I using the uh, order of element this notation, and order of a group is this mod of g notation is there. When we say that o of g means we simply there we asking with denoting as a order of a this element is there, not the order of the group is there. So these are the notation is there. So now simply is this I just said that we using this group, for example this group G under Z multiplication addition modulo 4, this is group. अब हम तो that is the equivalence class होता है. तो Z4 के जो एलिमेंट होंगे, Z4 के एलिमेंट क्या होंगे? Sorry, this is 0, equivalence class 0, equivalence class 1, equivalence class 2, and equivalence class 3. These are the element, 4 element of this. For example, I just take a order of a 2. What is the order of a 2 is there? So this is okay, no problem. I take a square of a this. Square of a this means what? Equivalence class of a 2 plus modulo 4. Equivalence class of a 2 is there. और equivalence class जो define की थी वो किस तरह से की थी? This modulo 4 2 is there, and this is nothing but is equal to 0 is. Okay, 2 plus 2 is equal to 4. Divide by 4, remainder is equal to 0. So this is giving you a equivalence class of a 0 is there. इस set के अंदर identity element क्या है? This is the identity element is there. So 2 की power 2 is equal to what we getting? Identity element is there. 2 it's 2 to the power 1 is not identity. 2 to the power 2 is identity. Maybe 2 to the power 3, 2 to the power 4 is also identity, but we have to using the smallest. So this means we can say that order of फिर again light is gone is equal to 2 is there. So now this is equal to 2 is there. So for example 3. So we have to take a 3. So 3 to the power square is equal to what? We can just say that 3 enter addition modulo 4 and 3, and this can be written as a 3 addition modulo 4 3, and now what is this? 3 plus 6 divided by 2 is modulo 4, remainder is equal to 2. So 3 square is not equal to identity. So now we move to the 3 to the power 3, and then 3 to the power 3 can be written as a 3 to the square multiplication modulo 4, again 3, and this we have to 3 ka square. We know that is equal to 2 is there. So equivalence class 2 under multiplication of 4 is equal to 3 is there. Now this can be written as a 2 plus addition modulo 4, 3 is there. 3 plus 2 is a 5 divided by 4, remainder 1 is again there. So this is again is not identity element is there. So we move to the next power. So now we have to move to the next power is 3 to the power 4. So this can be written as a 3 to the power 3, and then we have a modulo 4, and then we have a 3. 3 to the power 3 हमने already calculate कर रखी है. This is equal to 1 is there. So we have to just say that this is equal to equivalence class of 1. Addition modulo 4 is 3. And now this can be written as a 1 addition modulo 4, 3. 3 plus 1 क्या होगा? 4. 4 divided by 4, remainder is equal to 0. So 3 to the power 4 कितना आया? Is coming to the 0. So that means 3 to the power equivalence class of 3 to the power 4 is equal to identity element. So we can say that order of equivalence class of a 3 in this group is 4. Okay. For moment, if you what is the order of a 1? I just said that.
So we just say that I can okay. So if order of 2, we calculate order of 2 is equal to 2, order of 3 is equal to order of the element of order 3 is equal to 4. Now if we try to find the order 1, what is the order of 1 equivalence class 1 is there? So now we just try what is order of equivalence class of 1 is there. So equivalence class of 1 का order करेंगे तो क्या होगा? This 1 तो power 1 ये 1 रह जाएगा, not identity. Now we have a power 2. This is means equivalence class of 1 mod 4 equivalence class 1. Now this is equal to simply is equal to 2 is there. So is not identity element. Now this की power 3 is equal to 1 to the power 2 equivalence class mod 4 equivalence class 1. Now you have a power 2 we have to calculating is equal to 2 modulo 4 or 1, that is equal to you have a simply is equal to 3. Now if you take a 1 to the power 4, now you have a 1 to the power 3 plus 1. Now this is 3 power 3 we are already calculating 3 is there. So you have a equivalence class 3 mod 1 and this is equal to you have a 4 and this is equal to 4 is equal to 0. So again in this group we have a order of equivalence class 1 is equal to 4 is there. So order of Z4 में there is a 4 element 0. Identity element हमेशा ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा 1 होगा क्योंकि 0 इसका पावर 1 लेंगे तो क्या होगा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा वो 1 होगा और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा इज मे बी 1 2 3 इज डिपेंड व्हेन वी गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सच ए सो इसके अंदर देयर इज ए Z4 इन Z4 वी हैव ए 4 element 0 equivalence class 0 order 1 equivalence class 1 order 4 2 order 2 3 order 4 is there. There is 2 elements of order 4, one is element of order 2 and one is element of order 1 is there. So now for another example how to this is I just take a very finite examples is there. For example, I take some under multiplication is there. Okay, so I'm not. I just I take. Okay, I just sharing something here. Okay. Now I take for example G is equal to 1 minus 1 I minus I. There is a 4 element. Now this G is a group under multiplication, complex multiplication is there, and this is the this is clearly this form a group under this multiplication is there. So if this is a form a group, now we have to find the identity element here. Identity element is here is a 1 is there. Okay, so identity element is 1 is there. Now order of a 1 is clearly 1. Now we have to move to the order of other. For example, minus 1 to the power 1 is equal to minus 1. Now we have a minus 1 to the power 2 is equal to, we have a minus 1 into minus 1 and that is equal to 1 is there. So order of minus 1 is equal to, you have a 2 is there. Now we have a order of a I. So we have a I to the power 1 is equal to I. Now we have a I square is equal to, we have a I into I. I into I is equal to what? I square. I square is equal to minus 1 is there. Minus. So not equal to 1 is there. So now we have to calculate I to the power 3. So I to the power 3 is equal to what? I square into I. I square we calculate already minus 1
and then we have a I is there, and this is equal to minus I is there. Again, this quantity is not equal to 1. Now we have to move to the I to the power 4 is there. So I to the power 4 can be written as I to the power 3 into I to the power 3 already calculating. We have a, this is equal to minus I, and you have a I is there. So what is this? This is equal to minus I square, and that is equal to 1. Okay, because I square is equal to minus 1, and minus identity is there. This is equal to identity element. So order of I is equal to what? Order of I is equal to 4 is there. Order of 1 is equal to 1. Similarly, if similarly we have to just check the order of minus I. So minus I to the power y is equal to minus I, clearly not equal to 1. So now we have a minus I ka square. You have a minus I is equal to what? Minus 1. Again not equal to 1. Minus I to the power 3. You have a minus I square into I is there. So this is equal to minus 1, and I is there. So you have a minus I is there. So now minus I to the power 4. You have a minus I to the power 3 into minus I. And now this can be written as I to the power minus 3 is equal to minus I, and minus I is equal to 1 is there. So 1 is there. क्या ये 1 होगा? -1 होगा। -1 होगा, तो कहीं गलती कहाँ हुई? हैं? देखो कहीं गलती हुई कि गलती नहीं हुई? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख दो बेटा, तो वो तो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ माइनस आई है, कहीं पॉइंट नहीं कर रहे, तो ये प्लस आई हो गया, ठीक है, तो ये प्लस आई हो गया, ये प्लस आई हो गया, तो दैट इज इक्वल टू +1। क्लियर? आया समझ में? नहीं, क्योंकि माइनस आई टू द पावर 3 है ना, तो माइनस आई टू स्क्वायर एंड माइनस आई, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1, और माइनस, तो ये क्या आएगा? प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। तो पावर 4 तो क्या आएगा? आई क्यूब माइनस आई क्यूब कितना है? प्लस आई और माइनस आई, तो क्या हुआ? -1 और माइनस प्लस +1 इज, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ माइनस आई भी कितना हो गया आपके पास? 4 हो गया, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास? we have to just say that again is a 2 is there. So now for another example, we have a, suppose here I take 1 belongs to the I just take a group, infinite group, set of real number -1 under multiplication. This is form a group, is clearly. अब अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यहाँ पर 1 है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और 1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अगर ये 1 टू द पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए 1 इज अंडर दिस ग्रुप 1 is there. Now in place of this, if I take set of real number under addition is a group, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या मिलता है आपको? यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है। अब यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें, तो 1 + 1 + 1 प्लस, आप कितनी दफे भी 1 करते चले जाइए, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये तो कहीं 0 नहीं देगा,
तो ये क्या कहा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 फिर 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इज नेवर गिविंग यू आइडेंटिटी 0। इसका मतलब ये किसी भी कितने भी इसमें 1 ऐड करते चले जाओ ये आपको 0 नहीं देगा। इसका मतलब अगर ये 0 नहीं देगा तो इसका मतलब ये किस इसकी जो 1 की कितनी भी पावर ले ले, इज नॉट गिविंग यू आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इसकी पावर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देगी तो ये क्या होगा, 1 हैज ए इनफाइनाइट ऑर्डर। हमने कहा था ना कि इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट g to the power n is not equal to n for all n belongs to n, we say that g has a infinite order। यानी हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी पावर पर हम जो है हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले, कितनी भी पावर करते चले जाए, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हमने देखे दो डिफरेंट ग्रुप लिए। अगर सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन -0 ले लेते हैं तो 1, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ भी अगर प्लस में बात करें ना इसमें 0, तो 0 का ऑर्डर 1 होगा, 0 to the power 1 यानी कि 0 तो सिंपली 0 है? तो 0 की कितनी पावर करते चले जाएंगे, 0 की पावर 2 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 3 भी। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 0 to the power 1 पे 0 मिल रहा है हमें। स्मॉल इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का यहाँ पर भी ऑर्डर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन बाकी जो होंगे एलिमेंट जो होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, एज ए इनफाइनाइट ऑर्डर पे होगा। तो इसका मतलब इसमें जो होगा हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो होगा ऑर्डर अगेन क्या होगा, इज ए इनफाइनाइट ऑर्डर का हमारे पास ऑर्डर मिलते जाएगा। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन द ग्रुप Z अंडर एडिशन इज इनफाइनाइट ऑर्डर। आप अंडर एडिशन ग्रुप में कोई भी ले लो तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर क्या मिलता चला जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर मिलेगा। देयर इज ए नो फाइनाइट ऑर्डर इज बिलोंग्स टू दिस सेट। फॉर एग्जांपल अगेन GL2Z, GL2Z means the elements are, you know that GL2, maybe some is a new student, so I just Z I just GL2Z is a 2 by 2 matrices A B C D। उस एलिमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू A B C D क्या है, यहाँ पर इंटीजर दे रखे हैं और कंडीशन क्या है, AD माइनस BC शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये GL2 के एलिमेंट होते हैं। GL2 Z लेंगे तो Z के एलिमेंट हो जाएंगे, R लेंगे तो R के, यानी कि 2 by 2 इनवर्टेबल मैट्रिसेस whose elements are the set of integers are there। अब ये इस टाइप के, अब हम कहते हैं कि ये जो है सॉरी ये जो है एलिमेंट, ये हमने ग्रुप है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है, अंडर एडिशन तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होता। ठीक है, ये हमने बता चुके हैं। तो अंडर एडिशन जो होता है GL2, जो अंडर एडिशन इज इवन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन इज फॉर्म ए ग्रुप इज देयर। सो एक एलिमेंट लिया हमने 1 - 1 0, so this is AD 0 minus minus plus 1, so is non-zero, so invertible matrix is there। So if this matrix is invertible matrix is there, then we have to find the what is the order of a this element into a this thing। So हमने क्या लिया कि just we take A matrix है तो 1 - 1 1 0। अब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सो इसके अंदर जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें ये दिखाना है इसकी पावर जो होगी वो कहाँ पर जाकर जो है वो आइडेंटिटी मिलेगी। सो आई जस्ट stop this and then I just move to the screen। Okay, now so we have a matrices, what is the matrix, I just check, 1 - 1 1 - 1 1 0। So we have a 1 - 1 1 and 0, this is the A we have it. So we take A square, if A square means 1
minus 1 1 0. Now we have a 1 minus 1 1 0. Now this is equal to, we have a 1 minus 1. What we getting? So I just say, you can just say that I, 0. eh? This matrix is giving you. So so okay. So this is you have a 0, and now this multiplied by this you have a minus 1, and now this is equal to 1, and this is equal to, again you have a Minus 1. minus 1. Now we have a cube, can be written as a square into a is there. So now you have a 0 minus 1 1 minus 1. Now you have a 1 minus 1 1 0. Now again you have a, this is minus 1, Minus 1. and this is you have a 0. 0. Now this is you have 0. is 0, and this is you have a 0. minus 1. Okay, so I just say that this a cube is equal to something is equal to minus I. Okay, a to the power 3 is equal to, क्या कर सकते हैं, अगर माइनस बाहर ले लें तो ये क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, 1 0 0 1 यही होती है. अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस 1. सो अगेन इज नॉट आइडेंटिटी. सो अब हम क्या करेंगे, a टू द पावर 4 करेंगे. a टू द पावर 4 क्या है, a टू द पावर क्यूब इंटू a मिलेगा. So this is again you have a minus I into a is there. So minus 1 0 0 minus 1, and then again you have a 1 minus 1 1 0 is clearly not equal to identity. So ultimately कहाँ मिलेगी ये, this is giving you a to the power 6 is equal to a to the power 5 into a is there. So identity you can just verify this है. तो जब इसको वेरीफाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा कि ये a to the power 6 पर हमें क्या दे देगा, this is giving you a identity matrix. Can you check yourself or no? Yes, sir. You can check yourself. Just say that here. So this a to the power 3 is equal to minus I. So a to the power 4 or 5 क्या है, not equal to identity. A to the power 6 we getting the identity element. So a to the power 5 is not equal to identity. So a to the power 6 is identity. Then after that is okay, no problem. We just say that. So order of this is equal to, we have a 6 is there. So order of a is equal to 6. 6 is there. So now we have to say that order of an element is equal to 6 is there. Now there is a very small result, and very important result is there. Okay, if G, for any group G, order of a G inverse is the same as the order of a G. अब आप देखिए, हमने जब अभी एक ग्रुप लिया था, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज दिस प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई लिया था यहाँ पर ग्रुप. सो यहाँ पर हमने ग्रुप लिया था तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ आई कितना आया था, 4 आया था. ऑर्डर ऑफ माइनस आई कितना आया था, वो भी 4 आया था. अब यहाँ पर देखिए आई का इनवर्स क्या होता है, आई का इनवर्स माइनस आई होता है, और माइनस आई का इनवर्स क्या होता है, आई आपस में इनवर्स होता है. यहां से देखिए हम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट जी, ऑर्डर ऑफ ए जी इनवर्स इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ ए जी. यानी कि जो ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा उसके इनवर्स का ऑर्डर भी वही होगा. अनदर एग्जाम्पल जो Z4 में हमने लिया था, Z4 के एग्जाम्पल लिया था, वहां पर क्या आया था कि हमारे पास जो ऑर्डर 3 का कितना आया था, ऑर्डर 3 का कितना आया था, 4 आया था. और ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 1 का भी कितना आया था, हमारे पास 4 आया था. आपको पता होना चाहिए कि 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 1 प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए 3 ये आइडेंटिटी एलिमेंट देता है. यानी कि 1 का इनवर्स 3 है और 3 का इनवर्स क्या होता है, 1 होता है. तो दोनों के ऑर्डर कितने आ रहे हैं, सेम 4 आ रहे हैं. तो जनरली वी कैन से दैट इफ ए ग्रुप in a group, if an element G is order n, then its inverse order is also the
सेम। तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इफ ऑर्डर ऑफ ए जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जी इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ ए जी इज द मीन जी टू द इनवर्स टू द पावर के। हमने क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने जी टू द पावर इनवर्स टू द पावर के लेके चले। अब जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं, जी टू द पावर के टू द इनवर्स होता है। तो अब जी टू दी हमने एज्यूम कर लिया कि अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारे पास वो के ऑर्डर का है, यानी के ऑर्डर का है, तो जी टू दी पावर के क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जी टू दी पावर इनवर्स टू दी पावर के इज आल्सो आइडेंटिटी। तो अगर ये दिखा देंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स इज आल्सो द के इज देयर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या लेके चले, ऑर्डर ऑफ जी एज्यूमिंग दैट इज इक्वल टू के, तो जी टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें दिखाना है कि इसका ऑर्डर भी क्या होगा, आइडेंटिटी बी के है, तो इसकी पावर आइडेंटिटी होना चाहिए। तो जी टू द पावर इनवर्स के कैन बी रिटन एज जी टू द पावर के का इनवर्स, और जी टू द पावर के क्या होगा, आइडेंटिटी होता है, इसका इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। नाउ वी हैव टू जस्ट से दैट इज सिंपली, so this is g to the power inverse to the power k is also identity, so it means order of g to the power inverse is equal to k is also is k is equal to there. So now the proof is very trivial, so we can say that the order of g and order of g inverse is the same order is there. So here the smallest positive integer, if any, g to the power n is equal to identity is the same as the smallest positive integer n such that g to the power n is identity. So ये हम easily prove कर सकते हैं. Now order of any element of a finite group G is a finite. Now very another is important is this कि हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। देखो अभी हमने जो इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट लिए वो क्या लिए थे, हमने लिया था सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब क्या है, ये सब इनफाइनाइट ग्रुप है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप है तो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, यानी कि दिस इज आल्सो ट्रिवियल इज देयर। द प्रूफ इज again very trivial, if g belongs to g then the elements of g ये सब एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपीटिशन स्टार्ट होगा तो वो हमारा जो होगा तो फाइनाइट होगा। तो कोई फाइनाइट होगा जी आर आर एस, तो जी टू दी पावर आर इज इक्वल टू एस होगा। अब जी टू दी पावर आर इज इक्वल टू एस होगा तो जी टू दी पावर आर माइनस एस किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। जब आइडेंटिटी के बराबर होगा इसका मतलब जी की पावर आर माइनस एस सम पावर जो है वो फाइनाइट दे दी, आइडेंटिटी दे दिया, तो इस ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट होगा। नाउ आई कैन स्टॉप टुडे हियर, इफ यू प्लीज यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, if you have any question you can ask me. Hello, no question? Anybody any question? No question? Okay, so thank you very much.